डेडलाइन वहां पे वैसे दिया मैंने, मतलब व्हेन आई हैव पोस्टेड दैट स्पेसिफिक असाइनमेंट 2, द डेडलाइन फॉर दैट असाइनमेंट 2 इज 1st of March. तो 1st of March मींस 12 AM तक, 12 PM तक. यस, ओके. 12 PM मतलब 12 सर 12 PM नहीं, 12 AM. यस, ओके सर. ओके, क्लियर है? Yes. Sir, MCQs we have to solve with solution. Not necessary. Yeah. You have to simply write down the question number and correct option for that. Okay. Okay, sir. Thank Clear you. it? Okay. But you have to properly solve it. Okay. If you have any doubt, you can ask anytime regarding that specific MCQ. Okay. But you have to solve it. Clear it? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Simply you have to write the question number and the correct option of that specific question. Okay. So we'll move forward with respect to unit number 3, and that unit number 3 is what? Functions and modules with respect to Python programming. Already functions are there in every programming language. With respect to programming, for example, C is there, C++ is, Java is there, and also only syntaxes are different with respect to that specific language. Okay. So functions and module. So as we have used different type of functions with respect to previous some code. For example, जैसे कि हमने list, tuple and dictionary में we have used different types of functions while you are applying some operations on performing operations on that specific list, tuple or that specific dictionary. जैसे कि हमने देखा था to add something at the last of list, what we have used? Append. So that append function, what we have used as it is. So that type of functions are called as built-in function, and we have to actually start. We have to learn in this chapter basically how to create our own function with respect to that Python programming, and how to use that function within that specific code and any application that we are developing by using any programming language. Okay. So basically, function is a piece of code written to carry out a specified task. What is the definition of function? Function is a piece of code written to carry out a specified task. You use function to bundle a set of instructions that you want to execute repeatedly. मतलब कैसे होता है generally? When you are developing an application, that specific 4 or 5 lines you have to logic, that specific logic you have to implement or you have to execute more than one time in that specific. You have to use that specific logic in multiple times in that specific application. So what you have to use? You have to write that logic inside that specific function and simply you have to call that function. जैसे कि अभी देखो when you are using a list, तो append function में हमने क्या किया? जितने भी लिस्ट हमने क्रिएट किए, हर एक लिस्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? append function यूज कर सकते हैं ना? Yes or no? Hello? Yes, sir. For example, I have created list 1, list 2, list 3, list 4. Total 4 lists I have created in our program, and I have to add the element in that specific 4 list. So what we have to use? Simply what I have to do L1.append, L2.append, L3.append, L4.append. So मैंने append करने के लिए, add करने के लिए कुछ logic लिखा नहीं है. I have that specific built-in function. Similarly, you can use your create your own functions also by using Python and apply that function for different functionality of that specific code or जो भी आप logic implement करने वाले the software you are implemented or you are solving any problem, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज मोर देन वन टाइम्स यूज करनी है. सो दैट फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज व्हाट? फंक्शन टॉपिक फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पाइथन. ओके, और एनी अदर लैंग्वेज. सो फंक्शंस बेसिकली डिवाइड होते हैं, डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रोग्राम एंड वी हैव टू कॉल व्हेन वी नीड. मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार फंक्शन क्रिएट किया, उसको कॉल नहीं किया तो नो प्रॉब्लम. एज पर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू कॉल दैट फंक्शन. तो आप लिख रहे हो वो फंक्शन इसलिए क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वो यूज करना है आपको मोर देन वन टाइम्स इन दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन. ओके, सो तभी हम क्या करेंगे? फंक्शन लिखेंगे. सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ योर फंक्शन? इज इट डिवाइड योर प्रोग्राम इनटू सब प्रॉब्लम. इट डिवाइड योर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम. ओके, सो टाइप ऑफ फंक्शंस अभी देखो. फर्स्ट होता है बिल्ट इन फंक्शन. दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शन इन द पाइथन जो हमने ऑलरेडी देखा है. मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन. ओके, then append function, then that remove function, pop function, update function. So these are the different functions. Those are given by Python library. Okay,
So that you have to use as it is. Second होता है user defined functions. So these are the functions which are created by user. मतलब हम जो function यहाँ पे create करने वाले हैं through program, that type of functions are called as what? Tell me. Hello. User defined. User The defined. function. User defined. हाँ, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन होता है इसके, the functions which are predefined are called as what? Built-in Built-in function. Okay. And the functions which are created by user are called as what? User defined. User defined function. And third one, the function which are created without def keyword. अरे def keyword क्या है वो बाद में बताऊंगा आपको when we are actually starting creating that specific function. So जो function without def keyword होता है और by using lambda होता है, lambda keyword, उसे क्या बोलते हैं? anonymous function और lambda function. Clear है? Yes or no? Yes, sir. लैम्बडा फंक्शन हम आगे देखने वाली है इसी चैप्टर में. तो लैम्बडा फंक्शन एक्चुअली बाकी कहां पे भी यूज नहीं होता, मतलब दैट पार्ट इज नॉट देयर इन योर सी प्रोग्राम और सी प्लस प्लस और जावा प्रोग्राम. वहां पे दो ही फंक्शन होते हैं, वन इज बिल्ट इन फंक्शन एंड अदर वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. सो एनानोमिक फंक्शन और लैम्बडा फंक्शन हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको हाउ टू यूज दैट, हाउ टू क्रिएट दैट लैम्बडा फंक्शन विदाउट डेफ कीवर्ड. So all of you clear with the definition of function? It is a piece of code written to carry out the specified task. एक specific task हमें create implement करना है. For that purpose you have to write a function for that specific task. Again आपका एक कोई problem है उसको आपको सब divide करके आप क्या करते हैं, हर एक problem के लिए हम क्या करेंगे, सब problem के लिए एक एक function create करेंगे और वो function हम क्या करेंगे, we are correlate with each other and we are running that specific program with respect to that specific all that sub functions. So for that purpose we have to use function topic. So we will अभी built-in function में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं. Simply you have to remember that the function which are directly given by what? Python. They are which having predefined meaning. जैसे कि मैंने बताया था keywords बताए थे हमने, देखा reserved words, variable और reserved word देखा था ना हमने, yes or no? Hello. Yes. हाँ, Yes, so variables sir. क्या है? Variables are defined by user. Yes, sir. And keyword or reserved words are given by what? Python libraries, and which are having predefined meaning. Yes or no? Hello. Yes, sir. Okay. So we will move Yes, forward sir. with respect to functions in Python. How to define or how to. अभी need of function क्या है? वो सारे if theory exam will be there, then this question can be asked. Write a definition of function and what is the need of user defined function. So user defined functions are reusable code blocks. They only need to written once and they can be used multiple times. First one of the need. Function are very useful writing common utilities to specific business logic. That is one of the second need. This function can be also modified as per requirement. When you are modify that function definition, so that can be reflected when you are that function call anywhere in your specific program. So वहाँ पे वो reflection होगा. The code is usually well organized, easy to maintain, developer friendly, which means it can support the modular design approach. Okay, modular design approach means कैसे होता है, इसलिए नाम ही वैसे ही है, function है module. मतलब मैंने आपको बताया कि मैं कुछ प्रोग्राम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया होगा, वो डायरेक्टली आप विदाउट डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने की जगह पे आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को आप डिवाइड करेंगे डिफरेंट सब प्रॉब्लम में और हर एक के लिए कुछ तो लॉजिक लिखेंगे. And that logic you can put it in the form of function, and that function can be used as a as for that specific solution of that specific program. A user-defined function can be written independently. The task of project can be distributed for rapid application development. जैसे मैंने आपको अभी बताया मैंने, when you are developing your specific application in your when you are doing the job in IT industry or you are having your own setup, कुछ कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, the work will be distributed in teams. So that main module is divided into its different module. For example, Aditi is there, then Atharva is there. For example, Gauri is there, then Atharva is there. Okay. So in that case, what will happen that these three members are there, and one project is given assigned to that three members, and that project having three modules. So one module is assigned to Gauri, one module is assigned to Aditi, and a third one module is assigned to Atharva. Likewise, Abhishek. Likewise, if more modules are there, depending upon the size of complexity of project, your team size will be defined. Okay. If complex projects are there, your size of team will be obviously large. Okay. More than 5 members are there, 10 members are there, 50 members are also there. If lengthy complex projects are there. So her
एक के लिए क्या पुश टू मॉड्यूल दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको एक जीमेल का एप्लीकेशन बनाया बताया था मैंने, वो उसमें डिफरेंट सब मॉड्यूल्स आर देयर। तो आदिति डूइंग द जॉब ऑफ लॉगिन पेज, अथर्व डूइंग द जॉब ऑफ कंपोज मेल फंक्शनलिटी, देन Gauri is doing the job of that Google Classroom functionality of that specific Gmail or that Google application. Likewise, anybody. So likewise, that modules are divided into. तो यही फायदा होता है कि you have to do the project in modular wise. You have to divide your module into sub modules. And again, वो module जो होता है अभी obviously वो module if you are doing the complex project, उस module में भी complexity होगी. So that module again divide into sub modules, and that sub module again consists of what? Some functions, okay, more than one function, two function, three function, like functions are there, and you have to use that function for developing that specific module. So all of you clear with the need of or importance of user defined function? Yes or no? Anybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now how to define a function or user defined function? How to define a function, और उसमें होता है यूजर। ऑब्वियसली बिल्ट इन फंक्शन डिफाइन नहीं करते हम, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या होता है, पाइथन ने दिया है, वो क्या उसे क्या कर रहे हैं हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। यस और नो? वी आर डायरेक्टली कॉलिंग द फंक्शन, वी आर पासिंग द पैरामीटर फॉर द और आर्गुमेंट फॉर दैट फंक्शन एंड वी गेट द आउटपुट फॉर दैट स्पेसिफिक। जैसे कि हमने किया था L1 डॉट अपेंड इन ब्रैकेट 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 5 जो पैरामीटर हमने ऐड किया है राउंड ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, वो क्या होगा? अपेंड होगा। कहां पे अपेंड होगा? at the end of that specific list. Yes or no? List. Okay? Yes, sir. तो इस केस में हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, इस केस में हमने फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है। Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. Now what you have to do while you are doing the user defined function, you have to first create that function. You have to first define that function. So first step you have to mention declare the function with keyword def followed by the function name. What is the first step while defining the function in Python? Hello. We have to use First write the keyword def followed by the function. followed by Yes, function name. you have to use a reserved keyword which is given by what? Python, that is def keyword followed by what? Function name. अभी function name क्या होगा यहाँ पे? What is the function name? हाँ? So function name has got the same rule as the variable. So you have to Yes, make sure yes. जो हमने identifier देखा था, identifier के definition में it is a name which is given to variable or any function. Yes or no? वो definition में था ना? Function, comma variables. Yes. So that function name is same as that of variable name. Okay. जो rule आपने variable name के लिए apply किए थे, that same rule you can apply for function name. जैसे कि मुझे करना है display कुछ data display करना है. For example, display a hello world on your output scheme by using function. So what I have created, def display bracket open bracket close colon and what is I have written inside that function, print hello world, and then I have called that function. वो करके देखेंगे अभी यहाँ पे. Okay. So all of you clear with the declaration of that function? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Second thing is what? Step 2. Write the parameter inside the opening and closing parenthesis of the function and end the declaration with colon. What you have to do now? आपने फंक्शन का नाम दिया, अभी फंक्शन का नाम देने के बाद आपको ओपन पैरेंथेसिस करना है, क्लोज पैरेंथेसिस करना है, और उसके अंदर आपको क्या डालना है? पैरामीटर्स डालने। अभी पैरामीटर्स आर ऑप्शनल पार्ट. If your program don't need any parameters, you can empty your function body, okay, function parenthesis. Okay. If you want parameter, जैसे addition of 2 number का प्रोग्राम करना है, तो उस केस में आप पैरामीटर डाल सकते हैं a, b. Then you can write down c, function की बॉडी में लिखो c is equal to a plus b. Okay. और जब पैरामीटर पास करेंगे तो पैरामीटर पास करो. Okay. All of you clear with this? Yes or no? Yes. Yes, So sir. parameters are not compulsory part for that specific function. उसके बाद पैरेंथेसिस होने के बाद ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था while you are writing if, elif, else, for, while, all these statement you have to write. Then what you have to do? You have to give what? Colon. Likewise for function definition also you have to give what? Colon. क्यों colon देना है? Anybody tell me? Sir, it represent a block starting. Yes, it represents what? Starting of the block. अब ये block represent कर रहा है, मतलब उसके अंदर वाले जितने भी statements हमें लिखने हैं फंक्शन के बॉडी के, what you have to write here? कैसे लिखने हैं उसको? Indentation. Yes, you have to give indentation. जैसे आपने if के लिए लिखा था, for के लिए लिखा था, same way you have to write for what? Function. Okay. Now step number 3 होता है add the program statement to be executed. मतलब जो प्रोग्राम अब लॉजिक आपको लिखना है, that you have to write inside that function body. Clear है सबको? Step number 3. Yes or no?
Yes, sir. ओके स्टेप नंबर 4 एंड द फंक्शन विथ और विदाउट रिटर्न। अभी रिटर्न स्टेटमेंट आपने नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न की वैल्यू क्या होती है, नल। क्लियर, यस और नो? और रिटर्न करना है आपको कुछ, रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए, लाइकवाइज यू कैन डू इट एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर कोड। ओके, सो रिटर्न नहीं लिखा तो भी चलेगा, जनरली नहीं लिखते हैं, पर आप देखेंगे हम उसके भी प्रोग्राम लिखेंगे, रिटर्न के भी प्रोग्राम देखेंगे। नहीं लिखेंगे तो एक्सप्लिसिटली वहां पे कॉल होता है and that value will be what, 0. Return value is always what, 0. So these are the rules or these are the steps that you have to follow for while writing the or defining the specific function. ये तो हो गया डेफिनेशन। इसके बाद और एक स्टेप होता है, अभी आपने प्रोग्राम में फंक्शन डिक्लेयर किया और डिफाइन किया तो प्रोग्राम रन होगा क्या? यू आर गेटिंग द आउटपुट? No, sir. No. What you have to do? You have to call that function in that specific code. Yes or no? Yes, sir. Okay? Yes, Okay. sir. तो वो क्या करेंगे, वन बाय वन एक कोड देखेंगे। अभी यहाँ पे ऑलरेडी, हाँ, ये सिंटैक्स पहले देखेंगे। ऑल ऑफ यू सी द सिंटैक्स, ऑल ऑफ यू स्क्रीन इज विजिबल ना? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. देखो डेफ कीवर्ड यूज किया, उसके बाद मैंने फंक्शन नेम लिखा, ये सिंटैक्स है एक्चुअली। उसके बाद देखो ब्रैकेट में मैंने पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, देन कोलन, उसके बाद प्रोग्राम स्टेटमेंट 1 2 3 लाइकवाइज। तो वहां पे गलती से 3 हो गया, 2 चाहिए, 2 3 लाइकवाइज एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद रिटर्न एक्सप्रेशन, रिटर्न एक्सप्रेशन अभी दैट इज आल्सो ऑप्शनल पार्ट, नहीं लिखा तो भी चलेगा। इफ यू वांट टू रिटर्न समथिंग यू कैन रिटर्न, मतलब आउटपुट वैसे चाहिए तो। ओके, देन सिंटैक्स टू कॉल और एग्जीक्यूट यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी ये हमने देखा, ये जो पार्ट है, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज, व्हाट वी हैव टू कॉल इट? हेलो, Function. Built-in function. फंक्शन डेफिनेशन, व्हाट यू हैव टू कॉल इट एज फंक्शन Function definition. डेफिनेशन। अभी ये सिंटैक्स टू कॉल और अभी यहाँ का क्या करना है, हमें ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या लिखना है, फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है पैरा 1, यहाँ पे लिखा है पैरा 2, वहां पे जब हम फंक्शन बॉडी डिफाइन करते हैं उसमें जो पैरामीटर डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर। जो भी वैल्यू वहां पे डालते हैं उसे बोलते हैं पैरामीटर्स। और जब फंक्शन कॉल करते हैं उसमें जो वैल्यू पास करते हैं उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और एक चीज इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ऑल ऑफ यू क्लियर? The parameters which are in at the time or declared at the time of definition of function are called at what? Actual parameter, formal parameters. And the parameters which are used at the time of calling function, that specific function, what we are called it as what? Formal parameters. Parameters. Yes, all of you clear? Actual parameters clear है सबको? Yes or Sir, no? एक मिनट, sir, calling के वक्त the parameters are called as actual parameters. Yes, 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 yes. एंड जो यहाँ पे होते हैं वो फॉर्मल। और दूसरा एक वर्ड है उसके लिए, जो फंक्शन डेफिनेशन होता है उसको बोलते हैं पैरामीटर्स नॉर्मली, और जो फंक्शन कॉल होता है जब वो पास करते हैं उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर है? Okay, sir. सर नो, तो दो चीजें बोल सकते हैं, एक तो फॉर्मल एक्चुअल और बोल सकते हैं पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर सबको? Okay, sir. Yes, ऑल ऑफ sir. इट क्लियर विथ? यस और नो? सिंटैक्स क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. अभी देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल किया है हमने। क्या किया है इस एग्जांपल में? Printing hello from function print होगा on the screen output. यस, तो हमने क्या किया The function एक्चुअली, to- नॉर्मल जब प्रोग्राम करेंगे मुझे ये आउटपुट चाहिए, सिंपली क्या लिखते हैं, प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। यस और नो? Yes, Yes or sir. no? But if your problem statement is like this, write a hello from function message or display hello from function message on your screen by using function. So what you have to use? You have to create one function, write down that print function inside that function body and call that function. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे। सिंपल प्रोग्राम देखेंगे, function definition, how to create a function. दिख रहा है सबको? स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट लिखेंगे। ओके, एंड आई विल हेलो। सो ये क्या होता है, ये सिंपली क्या होगा, हेलो डिस्प्ले करेगा ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Now we have to do one thing. What we have to write this inside what function. What I have to create is def, then followed by disk नाम का function किया मैंने, इसमें कुछ पैरामीटर नहीं डाले, ऐसे colon. What you have to do here? What you have to do? Indentation. Yes or no? Yes. Yes, sir.
what you have to call? We have to call that function. Okay. अभी पैरामीटर नहीं है इसमें, तो no need to pass any parameters. Okay. Clear है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If I have called this function more than one time, okay, what will be the output? hello hello Hello. Three times. Hello. तो आपको नीड ऑफ फंक्शन समझ में आया अभी? मुझे हेलो Yes. तीन चार मॉड्यूल में मुझे हेलो डिस्प्ले करने का आता है। मतलब एक एग्जांपल को आपको बता रहा हूं मैं क्या सिंपली करूंगा, ये 2 लाइन लिखने की जरूरत है हर टाइम नहीं ना। डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, ये डिस्क को क्या करूंगा, कॉल करूंगा जहां पे मुझे कॉल करना है। गेटिंग? यस और नो? अभी क्या है, Yes, एक sir. और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया डेफ। ओके, उसके बाद डिस्क वन नाम का फंक्शन क्रिएट करना। व्हाट आई हैव क्रिएटेड, डिस्क वन। एंड हियर ये तो हो गया, रहने दो यहाँ पे डिस्क वन को कॉल करता हूँ। ओके, एंड देन व्हाट आई विल डू, print now anybody can tell me the output of this code. Anybody? Hello one, hello. Hello, one. Hello, hello. Hello one, and what will happen? hello Two times hello. Okay, now again, now what will happen? Hello one. Hello. recursion First क्या होगा पहले बताओ? Hello. 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 और फिर 3 बार hello. मुझे बताओ, दोनों फंक्शन कंप्लीट करने के बाद पहला कॉल क्या किया मैंने? display one डिस्प्ले वन ना। तो डिस्प्ले वन कॉल होगा, डिस्प्ले वन के अंदर जाएगा, डिस्प्ले वन अंदर जाने के बाद क्या लिखा है? हेलो वन ना, हेलो वन डिस्प्ले होगा। उसके बाद अगेन मैंने क्या किया है, पहला फंक्शन डिस्प्ले वन के अंदर मैंने क्या किया है, कॉल किया है। यस और नो? Yes, or sir. no? So Yes, you can sir. call one function inside another function also. Yes or no? Getting? Yes or no? Yes, sir. अरे Yes, सिंपल है, sir. यहाँ Yes, पे sir. करके बता दो, यहाँ पे कमेंट डाल दो पहले, फिर देखो अभी आप। So the hello one and hello print होगा. यस, क्लियर है सबको? देखो अभी Yes, मैंने डिस्क को डिस्प्ले किया था क्या, वहां पे राइट किया था क्या, वहां पे डिस्क को क्या किया मैंने, कमेंट डाला है। तो हेलो भी क्या क्यों आया आंसर, बिकॉज व्हाट आई हैव डन, व्हाट inside this one function after hello one, what we have called, which function we have called? Display. This one. This function. Okay, first function. Okay, so now we will do another thing. Now, wait, 1 minute. Now tell me. hello What is the one answer? Hello one. Hello one, hello. Hello one, hello. Hello. This one. Only hello one. Hello. hello Hello one, hello. Hello and then hello one. Hello one, hello. फिर hello one and उसके बाद hello. Hello one, hello. Hello. Clear है? Yes or no? Yes, sir. All of you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Clear है सबको? How to create sir. function, simple function, and how to call that function inside another function also. अभी ये पैरामीटर का बाद one by one जाएंगे आगे. Okay. So any doubt regarding this? How to define function? Clear है सबको? Yes or no? Yes. So एग्जाम में Yes, एमसीक्यू पे, अभी एमसीक्यू एग्जाम होंगे और इस टाइप के कोड आपको होंगे। Yes or no? Likewise, क्या होगा, आपको दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन दूसरे के अंदर कॉल किया जाएगा। व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस कोड? लाइकवाइज कोड विल बी देयर एंड यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू चूज करेक्ट आंसर फॉर दैट स्पेसिफिक फंक्शन क्वेश्चन। यस और नो? एनी डाउट? क्लियर है सबको? ओके, Yes, sir. ओके, यू विल मूव फॉरवर्ड। अभी रिटर्न स्टेटमेंट का ऑलरेडी मैंने बताया था कि अभी यहाँ पे उसका डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सी वन एग्जांपल, वी डायरेक्टली डू इट ऑन console compiler. We'll make a comment for this.
अभी डेफ एडिशन का एक प्रोग्राम देखेंगे, ऐड ए कॉमा बी। ओके, उसके बाद मैंने किया c इज इक्वल टू a प्लस बी। देन ऐड इन ब्रैकेट, एक की वैल्यू मैंने पास की। व्हाट इज आंसर? 6. ओके, उसके बाद ये प्रिंट में डालेंगे। प्रिंट डालना पड़ेगा, यस और नो? सर पर आउटपुट नहीं आएगा फिर, क्यों नहीं आएगा? रिटर्न सी करना पड़ेगा, हाँ रिटर्न सी करना पड़ेगा। रिटर्न यस, यहाँ पे रिटर्न तो बाद में देखेंगे, उसके पहले यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम। ओके, प्रिंट इसका सी। वन यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, वो रिटर्न का बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, विदाउट रिटर्न टिक करेंगे। ओके, करना था इन ब्रैकेट व्हाट आई वुड। अभी यहाँ पे क्या किया हमने, विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट का देख रहे हैं अभी। अभी इसका आउटपुट क्या होगा? 6 डायरेक्टली होगा ना, प्रिंट होगा ना। ये तो हमने किया, किससे किया? अभी रिटर्न स्टेटमेंट मतलब क्या है? विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिटर्न सी। रिटर्न जो भी आपको वेरिएबल, जो भी आपको रिटर्न करना है वो। ओके, और यहाँ पे क्या होगा अभी, ऐड 2,4। अभी यहाँ पे हमने प्रिंट किया है क्या कुछ? नहीं, सो इट विल डिस्प्ले आउटपुट और नॉट? It will Yes. give the output. यस। Return C लिखा है, C is A plus B. So क्यों नहीं आया आउटपुट, क्यों नहीं आया? प्रिंट स्टेटमेंट में डालो। सर आपने कॉल, हाँ, यस और नो? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट। डायरेक्टली यहाँ पे कुछ वेरिएबल भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसको प्रिंट में भी लिख सकते हैं ना, यस और नो? प्रिंट इन ब्रैकेट क्लियर है, यस और नो? यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली सी की वैल्यू रिटर्न हो गई। ओके, और हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐड नाम का फंक्शन क्या किया, पास किया, उसके दो पैरामीटर। अभी यहाँ पे बताओ, विच आर द पैरामीटर्स, विच आर द आर्ग्यूमेंट्स? सर ए बी आर A and B parameters and 2 and 4 are the arguments for that parameters. Yes or no? Clear है सबको? yes Okay, sir. yes sir. तो रिटर्न स्टेटमेंट से भी प्रोग्राम कर सकते हैं और विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट से भी प्रोग्राम कर सकते हैं। Yes or no? All of you clear with this? Okay. Now we move forward with respect to देखो यहाँ पे अभी क्या किया उन्होंने, थर्ड वेरिएबल भी लिया है, वो भी करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे किया है उन्होंने, क्या किया यहाँ पे, सिंपली दे हैव डन व्हाट, सम इज इक्वल टू ऐड इन ब्रैकेट 3,4 एंड देन व्हाट दे हैव प्रिंटेड। तो क्या किया यहाँ पे हमने, व्हाट वी हैव डन, वेरिएबल लेके प्रिंट किया। हाँ, वी हैव जो भी फंक्शन था वो किसको असाइन किया हमने, एक वेरिएबल को। मतलब जो भी वैल्यू वहां पे रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न क्या होगा यहाँ पे अभी 7, तो 7 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, सम में। सम में। यस, ओके, क्लियर है सबको? एनीबॉडी हैविंग डाउट? नो। ओके, No sir. okay, we'll do another program. For example अभी def f1 करके एक फंक्शन लेते हैं and we will use one for I in range, okay, bracket what I do, print bracket double quote, okay, then we do call the function f1. Tell me the answer. 4 times hello. 4 times hello. 4 times hello. 4 times Hello will be 4 times. yes, okay, क्योंकि क्या यूज किया हमने यहाँ पे, फॉर लूप यूज किया है फॉर आई इन रेंज, और उसको किसके अंदर डाला है हमने, फंक्शन के अंदर डाला है, और फंक्शन को हमने क्या किया, डिफाइन करने के बाद उसको कॉल किया है। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग, yes or no? sir. So anybody tell me the how to create function step by step.
Anybody? Sir, can I? No, Manvi, you know. You don't give the answer. Anybody? Any other? Sir, Huh? so we have to write a df keyword. Def keyword. Okay. Use a function name Okay. Function name rule are, what are the rules? same as Variables. Yes. Followed by? followed by a parenthesis. Okay. Inside that parenthesis, what you have to mention? We can add a parameters. Parameters as per your requirement. Okay. And Then? then write colon, which indicates start of the block. Yes. And Next. then statements. Okay, then the statement which are inside that function, after execution of that function, that will be executed. Okay, those statement will be executed. And finally, what you have to do? You have to call that function. So for calling that function, what you have to do? You have to simply write down what? Function name followed by parenthesis. If parameters are there, you can pass the parameter for that function. So all of you clear with this? Yes or no? Yes or no? Yes, Okay. Okay. Now we will see another concept with respect to this. Mismatch between the function parameter and arguments. Mismatch between the function parameter and argument. For example, एक प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं f2 in bracket, जैसे कि मैंने यहाँ पे I, j colon print bracket, यहाँ पे मैंने लिखा value of I, j comma करके I, j. Then what I have written here, then I call that function जैसे कि f2, okay. Print में लिख रहे print bracket f2 and f5. Now tell me what will happen. Value 4,0. value of ij is 4. is one Is, of what I have told before writing this code, what statement I have mentioned while writing before this code? Mismatch between function parameter and arguments. Arguments. So what will ये आउटपुट देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है? जितनी parameters Yes. तो आपको समझ में आया? When you are defining any function, जितने पैरामीटर वहां पे आपने पास किए, मतलब when you are mentioning the parameter, those number of arguments you have to pass at the time of what? Calling that function. Yes or no? So इस टाइप के भी कोड आपके एग्जाम में होंगे. You have to write down the, तो इस केस में क्या होगा? Syntax error. What will syntax और syntax error ही है एक्चुअली, क्योंकि आपने वहां पे पैरामीटर पास किया नहीं है. More than one parameter you have to pass. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? एक वैल्यू वहां पे पास करना पड़ेगा. क्लियर है? Yes or no? Yes, sir. क्या है नीचे बाद में क्या है? None. सर वो प्रिंट में लिख दिया. हाँ, प्रिंट में लिख दिया है. वो क्या करना पड़ेगा हमें? Will do. क्या करेंगे यहाँ पे? F2 क्या करना पड़ेगा? What you have to do? पहले कॉल करना पड़ेगा. पहले कॉल करना पड़ेगा. और कॉल कैसे करेंगे? आप कहाँ डायरेक्टली कॉल करेंगे? डायरेक्टली कॉल करेंगे ना? Yes or no? Yes or no? F2 in bracket 3, 3,4. Print. yes or no? Clear है? Yes, sir. All of you clear with this? So ये बात आपको याद रखनी है. This type of question will be there. So more than 2 parameters will be at the time of definition. And while the calling that function, they are passing one. If 3 parameters are there, they are passing 2 parameters. In that case, also you'll get the error. Yes or no? So इसे बोलते हैं mismatch between the function parameter and arguments. All of you clear with this? Yes or no? Yes, sir. अभी Yes, और sir. एक करता हूँ मैं यहाँ पे. I will do one thing. Now what will happen? Error आएगा. What will happen? parameter से ज्यादा argument. हमने क्या किया है? अभी अपोजिट थिंग किया है यहाँ पे. What we have done? We have passing the parameter 1. मतलब जब फंक्शन डेफिनेशन तो वहां पे पैरामीटर कितना? एक ही है.
But at the time of calling that function, how many Two arguments were passed? parameters. Okay. Two arguments. तो question में given, but two were given. Okay, दो दिए हमने यहाँ पे. So this type of questions will be there. Okay, while you are doing the code with respect to that specific, while you are facing the exam with respect to MCQ for that functions. Okay, so error type के भी questions होते हैं exam में. Okay, clear है सबको? Yes. All of you Yes, clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We will move forward. See here, example of return multiple values. Okay, so example दिख रहा है सबको? Yes. Okay, so what we have done here? Define the variable. Addition and multiplication. हाँ, पर कैसे? उसके बाद क्या किया? उसके बाद एक सम और प्रोडक्ट नाम का फंक्शन, मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों कर रहे हैं आप, इसलिए एक फंक्शन लिया, a कॉमा b किया है. उसके बाद व्हाट वी हैव डन? c इज इक्वल टू a प्लस b. Return C and D. रिटर्न में कितने वैल्यू कर रहे हैं? मोर देन वन वैल्यू ना? yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? s कॉमा p सम प्रोडक्ट 10 कॉमा 20. so what will happen with respect to this? सर एस को सी असाइन हो जाएगा और p को क्या असाइन हो जाएगा? डी. एंड देन व्हाट वी हैव डिस्प्ले, ये करके देखिए डायरेक्टली. ओके, तो इसके यहाँ पे कमेंट डालते हैं. इफ यू आर डिफाइन फंक्शन, यहाँ पे क्या चाहिए? स्पेस, ओके, रिटर्न सी कॉमा डी प्रिंट. ओके, क्लियर है? हो गया? यस, यहाँ पे वो क्या हो गया? कर्ली ब्रैकेट, डबल कोट्स कॉपी किए थे ना वर्ड को. क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. So क्या किया? Yes, sir. हमने क्या किया? मोर देन वन वैल्यू विल बी रिटर्न. तो पहले में क्या किया? सी रिटर्न सी एंड रिटर्न डी. तो यहाँ पे हमने कॉलिंग फंक्शन के वक्त क्या किया? s कॉमा p इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट 10 कॉमा 20 एंड देन प्रिंट s एंड प्रिंट p. तो इन दिस वे वी हैव रिटर्न मोर देन वन वैल्यू. अभी एनोनिमस फंक्शन और स्लैश लैम्बडा फंक्शन. ओके, उसके पहले ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी ये रिवाइज करेंगे पहले. ओके, सो टेल मी व्हाट वी हैव, एनीबॉडी कैन टेल मी द व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन फर्स्ट. व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन? एनीबॉडी? When we want to use block of code so many times. We want to use for example one logic more than one times in that specific code. So for that purpose also what we have to do? Anybody? What you have to do? Yes. And another advantage of what function is what? What is another advantage of function? Function divides complex problem into sub-programs. Yes. That is also one of the advantage or need of that specific function. Another one, also one thing is will happen with this code, na? Your number of lines of code will be minimized, na? Yes or no? Yes. Decrease होंगे ना? Yes or no? Obviously ना. For example मैंने एक कुछ 4 लाइन का कोड है, लॉजिक है, वो मुझे 5 टाइम्स यूज करना, तो हर टाइम में लिखते नहीं बैठूंगा. मैं क्या करूंगा? उसको फंक्शन बॉडी में डालूंगा और वो क्या करूंगा? फंक्शन क्या करूंगा? जहां पे मुझे रिक्वायर्ड है वहां पे मैं क्या करूंगा? कॉल करूंगा. Yes or no? Yes or no? Yes. अब यहाँ पे हमने क्या किया था? ये प्रीवियस प्रोग्राम में जैसे कि हमने यहाँ पे सम का एक देखते हैं, यहाँ पे a कॉमा b, यूजर से इनपुट नहीं लिया था इसमें. ओके, so we will give the user input from user also. Sum is equal to a plus b. Okay, then print bracket sum. Okay, then what we will do another one thing. A is equal to, for example, int in bracket input bracket
enter value of a. Okay, then same line we will copy and paste it. What we have to do here now? B, na? B. Okay. And then what we have to do? Next one. What we have to do next? Sum. Sum A, comma B. यहाँ पे सम चलेगा क्या? नहीं सर, वो कीवर्ड है ना. कीवर्ड, यस, इसकी वजह से वो क्या आ रहा है वहां पे, सिंटैक्स चेंज हो गया, देखा, समझ में आया सबको? हाँ, yes sir. Okay, then what we want to call sum 1 in bracket a comma b. B. Clear? I will find it. Now in this, what we have to enter value for a and value for b. Clear है? Take a input from user for function program. Clear है सबको? कर सकते हैं? Yes sir. ओके, यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे एनीबॉडी? Yes sir. कैन वी डू दिस? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. नहीं होगा सर. गेटिंग? जो आपके डेफिनेशन के पैरामीटर है वो नहीं ले तो भी चलेगा. द पैरामीटर कैन बी डिफरेंट एट द टाइम ऑफ यू आर कॉलिंग द फंक्शन. यस और नो? यस और नो? Yes. सिंपल है ना. और जब हम इसलिए हम देखो, व्हेन यू आर डूइंग द प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट और टपल के जितने भी प्रोग्राम देखे थे, मुझे बताओ, जैसे कि हमने L1 डॉट इंसर्ट 2,5 ऐसे किया था ना. यस और नो? यस और नो? Yes sir. Yes. What is the meaning of that insert 2,5? सेकंड इंडेक्स. सेकंड इंडेक्स पे 5 वैल्यू ऐड Second होगा. index पे 5 ऐड करना. वहां पे मैंने सिंपली 2 लिखा रहता. व्हाट विल हैपन? एरर. एरर. क्यों एरर आता था? वो पैरामीटर मिसमैचिंग. यस और नो? क्लियर है? जो अभी हमने ऊपर देखा ना, ये दिस प्रोग्राम. यस और नो? इसलिए आप पूछ रहे हो, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग वेयर व्हाइल यू आर राइटिंग दैट L1 डॉट append 1,2,3 इज दिस करेक्ट और नॉट? क्यों करेक्ट नहीं है वो? 1,2,3 फॉर append फंक्शन. सर वो एक ही आर्गुमेंट है. एक ही इंडेक्स नंबर. बिकॉज append फंक्शन जब डिफाइन किया है पाइथन लाइब्रेरी में, उसमें कितने पैरामीटर पास किए थे? हाउ मेनी पैरामीटर्स? Only One one. parameter. So while you are calling that function, how many arguments you have to pass? 1. One. All of you clear with this mismatching of that specific parameter and arguments? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Again, user defined values, user input from user with respect to the function program. कैसे करना है, समझ में है सबको? Yes or no? Yes sir. Hello? Yes, Now sir. I will give one problem statement and do the program using function. Okay, write down problem statement as a homework. Write a program to check whether given number is even or odd using function. Write a program to check whether given number is even or odd using फंक्शन. हो गया? समझ में है सबको? Yes, sir. कुछ नहीं करना है. आपने जो इवन ऑड का अभी तक जो प्रोग्राम किया था, उसको सिंपली आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू? पुट दैट लॉजिक इनसाइड वन फंक्शन एंड कॉल दैट फंक्शन. यस और नो? Understood, sir. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टू डू इन दैट होमवर्क? Yes sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके. एंड सेकंड प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to calculate average of first n numbers, using function. To calculate average of first n numbers using function. Okay? Yes or no? Yes sir. ये Yes sir. दोनों प्रोग्राम ऑलरेडी आपने किया है. सिंपली आपको उसको क्या करना है?
कुछ लॉजिक भी आपको लॉजिक ऑलरेडी पता है, सिंपली यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स दैट वी हैव यूज फॉर क्रिएटिंग द फंक्शन। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फंक्शन? अभी तो जितना पार्ट हुआ है तब अभी तक का? No, sir. No, Okay. sir. यस और नो? Yes, sir. अभी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम लैम्बडा फंक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट देखेंगे, मतलब कैसे पास करने, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, उसके बाद वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, की आर्ग्यूमेंट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। 4 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट प्लस lambda function or anonymous function. This topic we will cover in next lecture. So any doubt regarding this? Yes or no? No, sir. No, sir. Sir, No, sir. होमवर्क किसको दिया था मैंने? वो कुछ तो होमवर्क दिया था ना? D division को दिया था। हाँ, डी डिवीजन को दिया था। क्या दिया था? वो लिस्ट को। हाँ, मैंने 2 लिस्ट क्रिएट करने के लिए बोले थे आपको, और उस लिस्ट में आपको क्या करना था, एक लिस्ट में आपको लेना थे 2, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट में लिया हेलो कॉमा वर्ल्ड, 2 स्ट्रिंग लिए मैंने। ओके, और दूसरे लिस्ट में क्या लिया? वेलकम और पाइथन प्रोग्राम, कोई भी 2 स्ट्रिंग लिया। हमें आउटपुट क्या चाहिए था? व्हाट इज आउटपुट आई वांट? Hello Python programming. हेलो पाइथन एंड World program. World program. और एनीथिंग जो भी आपने स्ट्रिंग लिया उसके अंदर। तो किसी ने किया ये प्रोग्राम? Yes, Yes. sir. एनीबॉडी कैन टेल मी द लॉजिक? तो बाकी के भी लोग सुन सकते हैं। ओके, एनीबॉडी? वेदांत, यू हैव डन इट? हेलो? Yes, sir. Okay, can you tell me the logic? Yes, sir. Okay, good. Tell me. Yes, sir. Just take a list 1 is equals Okay. to hello world in the list. Yes, Then yes. list 2 Python programming. Okay. Then take D equals to semi 1 colon. Okay. And then for I in range length of L1. Okay. Then take D equals to D plus semicolon plus length of I1, no, sorry, plus L1 into square bracket into I plus L2 into square bracket of I. Square bracket of I. So you are not given the space in between that hello and Python. Hello. Hello, Vedant. Yes, sir. Sorry, sir. That misleading by me. Yes, yes. You are not given the space, na? What? How you? Can you show the code right now? So, Abhishek, can you tell your logic? sir, can I share the screen? Yes, you can share your screen. Vedant, can you hear me? Vedant. Yes, sir, screen. हाँ, स्क्रीन शेयर करो ना, आप करो शेयर। मैं वेदांत से बोल रहा हूँ। वेदांत? Now, sir. Yes, it is okay. Network issue. Yes, sir. Now. Yes, it is visible. Okay, sir. I taken a list 1, which is Ritika programming, and list 2 do daily. Okay. Yes. Okay, and S as an empty string. Yes, correct. And out is a list which is going to show in output, which Yes, is an perfect. empty. Yes, And perfect. we are looping to for I in range length to length of L. Yes, perfect. As we know the both list of same length, then Yes. then we are taking the first element of the two lists simultaneously. Yes. L of I plus वहाँ पे स्पेस, वहाँ पे अपने डबल कोट में स्पेस लिखा है, बराबर ना? Yes or no? Single quote. Single quote is for spacing ना? Yes, sir. Yes. Then you are yes L2. उसके बाद आपने अपेंड किया, क्या अपेंड किया आपने? S अपेंड किया किसके साथ? जो एम्प्टी आपने वहाँ पे ऊपर डिक्शनरी लिस्ट लिया उसके साथ। Yes, correct. ये कब तक होगा अभी ये? जब तक वो लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। Yes, अभी लेंथ कितनी है लिस्ट की? 2 है ना? 2 है, मतलब 0 के लिए और 1 के लिए होगा, 2 के लिए फॉल्स होगा। यस सर। यस, उसके बाद आपने फर्स्ट लिस्ट प्रिंट किया, उसके बाद सेकंड लिस्ट प्रिंट किया, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट प्रिंट किया आउट। सो योर आउटपुट इज रिटिका डू है कॉमा प्रोग्रामिंग डेली।
Yes, This sir. is the perfect code as per our problem statement. All of you clear with this? दिख रहा है सबको? Hello. Yes, sir. All of you clear with this? The logic of this program. Take two lists which having two strings and combine this first, for example, index 0 with index 0 of another list and put it in third list. So यहाँ पे वैसे ही किया है. Okay. All of you clear with this? Sir, can you repeat the question for this? You have to take two lists. Okay. Two lists consist of two strings. For example, string one is string one of first element of that specific list one is hello, and second element is world. Okay. L2 first element is for Python and second element is programming. Okay. Okay. And what you have to do? Third list में आपको क्या करना है? हेलो पाइथन एंड वर्ल्ड प्रोग्रामिंग ऐसे करना है आपको. जैसे यहाँ पे इसने किया है रितिका स्पेस डू कॉमा प्रोग्रामिंग स्पेस टेली. ओके. मतलब ये चार टोटल कितने एलिमेंट है दोनों लिस्ट में? टोटल 4 थे. उसको कितने किया हमने? 2 किए. किसने को? कौन से लिस्ट में? लिस्ट नंबर 3 में. ऐसा नो. ऑल ऑफ क्लियर? क्लियर है सबको अभी ये? यस और नो? हेलो हेलो. Yes, sir. ओके. Yes. Yes. So we will stop here. Give your attendance. अभी दोनों साथ में देना है, डी और ई डिवीजन. रोल नंबर 1